बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक बहुत ही अहम टेडक्स टॉक का रिव्यू पेश करने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन और लाहौर पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। इसके साथ-साथ मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और मेरे जो ज़्यादातर इंटरेस्ट हैं वो एजुकेशन, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और पर्सनल डेवलपमेंट में हैं। अ, ये जो मैं रिव्यू पेश करती हूँ इसका मकसद ये है कि जो मेरे देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके लिए कुछ कोई अहम बात की जाए। तो ये टेडक्स टॉक जो है ये मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। इसमें एक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक आप कह लें कि अहम पहलू जो है अ, उसके बारे में बताया गया है। जो कि मैं इसमें चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये टॉक ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए बहुत ही मुफ़ीद है जो अ, पढ़ाई, होमवर्क, असाइनमेंट्स या इम्तिहानात की वजह से परेशान रहते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो हमारी स्पीकर्स हैं जिनका नाम किकी फ़ैन है जो कि अभी 8वीं जमात की स्टूडेंट थी। उन्होंने जब ये वो इसकी स्पीकर हैं, उन्होंने जब इसका ये टेडक्स टॉक दी तो उसमें उन्होंने इसकी बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि मतलब उनका जो अहम पैगाम बुनियादी पैगाम ये है कि सिर्फ़ ज़्यादा देर तक पढ़ना अहम नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। किकी फ़ैन जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि 8वीं जमात की स्टूडेंट थी, एक नौजवान स्पीकर हैं। वो अपनी ज़ाती तालिब इल्मी की तजर्बे से बात करती हैं। इसी वजह से इनकी बातें जो हैं ना वो बहुत हकीकी और रिलेटेबल लगती हैं। वो बताती हैं कि पहले वो होमवर्क उस वक़्त करती थीं जब कभी इनको टाइम मिलता था, वक़्त मिलता था। इनका कोई बाकायदा शेड्यूल नहीं था, इसलिए मामूली काम भी कई घंटों तक खिंच जाता था, जैसा कि हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता है। अच्छा, इस टॉक में वो 3 अहम तरीके बताती हैं, जिनसे हम कम वक़्त में बेहतर तवज्जो के साथ और ज़्यादा खुशी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो उन्होंने इसमें डिस्कस किया वो है कि अपने वक़्त को मुनज़्ज़म करना, ठीक है? किकी कहती हैं कि हमें पढ़ाई को जैसे अक्सर हम कहते हैं कि मैं बाद में कर लूँगी वाली चीज़ नहीं बनाना चाहिए। मतलब वो ये कहती हैं कि मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि ये बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमें पहले से तय करना चाहिए कि हम किस वक़्त और कितना पढ़ें। मिसाल के तौर पर सिर्फ़ ये कहने की बजाय कि रात को पढ़ूँगी या रात को पढ़ूँगा, हमें कहना चाहिए कि रात 7 बजे से 8 बजे तक मैं इस ख़ास चैप्टर को ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा। जब हम पढ़ने का वक़्त पहले से मुकर्रर करते हैं, तो हमारा ज़हन भी तैयार हो जाता है कि हमें पता होता है कि अब ये वक़्त सिर्फ़ पढ़ाई का है। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को बार-बार टालते रहने की आदत कम होती है। अ, मेरे ख़्याल में ये टॉक का बहुत ही एक मज़बूत पॉइंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ज़हीन या मेहनती ना होने की वज़ह से नहीं बल्कि प्लानिंग ना होने की वज़ह से पीछे रह जाते हैं। जब सारा काम आखिरी दिन के लिए रह जाए तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और काम मुश्किल लगने लगता है। अ, अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है उनका बहुत अहम पॉइंट वो ये है कि पढ़ाई के लिए मुनासिब माहौल बनाना। किकी फैन कहती हैं कि हम कहाँ और किस माहौल में पढ़ते हैं इसका हमारी तवज्जो पर बहुत असर पड़ता है। अगर इसमें मतलब वो बता रही हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट यानी आपका जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, अगर मेज़ गंदी हो, मोबाइल पास पड़ा हो
घर में शोर हो रहा हो या हमें भूख लग रही हो तो हमारा फ़ोकस बार-बार टूटता है। इसलिए वो मशवरा देती हैं कि पढ़ने से पहले चंद मिनट अपनी जगह तैयार करने में लगाएँ। मेज़ को साफ़ करें, ज़रूरी किताबें अपने पास रखें, कापियाँ और पेन सामने रखें। पानी या हल्का-सा कोई स्नैक्स वग़ैरह सामने रख लें और गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दें। ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन हकीकत में बहुत फ़ायदेमंद होती है। कभी हम पढ़ने बैठते हैं फिर मतलब पेन ढूँढते हैं, फिर नोट्स ढूँढते हैं, फिर फ़ोन उठा लेते हैं और आधा घंटा हम इसी में ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि शुरू में सिर्फ़ 5 मिनट की तैयारी बाद में बहुत ज़्यादा वक़्त बचा सकती है। वो ये भी समझती हैं कि हर शख़्स के पास अलग स्टडी रूम नहीं होता। घर में छोटे बहन-भाई भी रहते हैं, खेलते हैं, किचन से आवाज़ें आती हैं या टीवी चल रहा होता है। हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम अपने लिए बेहतर कंडीशंस ज़रूर ज़रूर पैदा कर सकते हैं। मसलन ये कि डिस्ट्रैक्टिंग आवाज़ों से बचने के लिए आप नेचुरल सी कोई साउंड सुन लें या हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लें। उसके इस्तेमाल से आप बाकी की जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बच सकते हैं। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने बताया है कि पढ़ाई को एक मुस्तकिल आदत बनाना चाहिए। ये नहीं किकी फैन का मतलब है ये नहीं कि हम सारा दिन किताबों के साथ बैठे रहें, इनका मकसद ये है कि हम रोज़ाना थोड़ा मगर फ़ोकस वक़्त पढ़ाई को दें। जब हम एक रूटीन बनाते हैं, तो पढ़ाई बोझ कम और आदत ज़्यादा बन जाती है। अगर हम सिर्फ़ इम्तिहानात से 1 रात पहले पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोग करते भी हैं, तो स्ट्रेस भी होगा और चीज़ें याद रखना मुश्किल होगा। लेकिन अगर रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, तो काम आसान लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अम, इसलिए मुझे इस टॉक की एक बहुत अच्छी बात ये लगी है कि किकी फैन पढ़ाई के साथ-साथ ज़िंदगी के बैलेंस की भी बात करती हैं। ये नहीं कहती कि हम मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज़ या आराम को छोड़ दें, बल्कि इनका कहना है कि अगर हम स्मार्टर तरीके से पढ़ेंगे, तो कम वक़्त में अपना काम मुकम्मल करके बाकी ज़िंदगी के लिए भी वक़्त निकाल सकेंगे। और इसके अलावा मतलब जो स्पीकर हैं किकी फैन इनका स्पीकिंग स्टाइल बहुत ही सादा है, फ्रेंडली है, मौसर है और वो मुश्किल अल्फाज या भारी थ्योरीज़ इस्तेमाल नहीं करती। वो अपनी मिसालों से बात को समझाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट आसानी से इनसे कनेक्ट कर लेते हैं। अलबत्ता इस टॉक की एक छोटी लिमिटेशन भी है। वो ये कि इसमें स्पेसिफिक लर्निंग टेक्निक्स जैसे पास्ट पेपर्स, सेल्फ टेस्टिंग और या कह सकते हैं कि रिवीजन का मेथड पर कोई तफसील से बात नहीं की गई। लेकिन चूँकि इनकी टॉक बिल्कुल मुख्तसर है और बहुत कम वक़्त की है, इसलिए इसमें इसका मकसद बुनियादी हैबिट बेहतर बनाना है और वो ये मकसद अच्छी तरह पूरा करती हैं इस टॉक में। इस टॉक में मैंने ये सीखा कि अगर मुझे पढ़ाई में फ़ोकस नहीं रहा तो खुद को फ़ौरन लेज़ी या निकम्मा नहीं कहना चाहिए बल्कि मुझे अपना सिस्टम देखना चाहिए कि क्या मेरे पास प्रॉपर टाइम टेबल है? क्या मेरा स्टडी टेबल जो है वो साफ़ और तैयार है? क्या फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा? क्या मुझे मालूम है कि आज मुझे एग्ज़ैक्ट क्या पढ़ना है? ये छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर काफ़ी बड़ा फ़र्क बनाती हैं। आखिर में इस टेडक्स टॉक का मोरल ये है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सही हिकमत अमली के साथ की गई मेहनत ज़्यादा मौसर होती है। इसलिए मतलब हमें घंटों किताबों के सामने बैठने की बजाय प्लान बनाकर बेहतर माहौल और रोज़ाना मुस्तकिल मिज़ाजी से पढ़ना चाहिए। यही स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर का असल मतलब है। सो एज़ अ एजुकेटर मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये टेडक्स टॉक देखने का मशवरा दूँगी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो पढ़ाई के दबाव, फ़ोकस की कमी या वक़्त की प्लानिंग से परेशान हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अच्छा,
अब मैं अपना रिव्यू जो है इंग्लिश में पेश करना चाहूँगी। पहले मैंने उर्दू में पेश किया। नाउ आई विल टॉक in English. Assalamu alaikum, everyone. Today I am going to give a review on a very useful and interesting TEDx talk by Kiki Fan called Study Smarter, Not Harder. This talk is especially helpful for students who feel tired, distracted, overwhelmed, or stressed because of homework and exams. The main message of Kiki Fan is very simple. Success does not always come from studying for the longest number of hours. Instead, it comes from studying for the longest number of hours. It comes from using your time, environment, habits in a smart way. Um, Kiki begins by asking a relatable question. Do you ever dread sitting down to study or completing your homework? Most students can relate to this feeling. We often plan to study, but then we get distracted by our phone, social media scrolling, uh, cleaning our room, talking with family, or simply feeling too tired to begin. The speaker understands this problem because she speaks from her own student experience. She explained that in the past, she used to do her homework whenever she had free time. So, because there was no proper routine, her work could take more than 3 hours. This shows us an important point. When we don't organize our study time, even simple work can feel longer and difficult. The first major lesson of the talk is time management. Kiki explains that study should not be something we do randomly, only we feel motivated. We should decide it in advance when we will study. For example, instead of saying I will study later, we can say we will study from 7 p.m. to 8 p.m. I will complete this chapter and or solve these questions. This small change makes a big difference. When we set a fixed time for studying, our mind become more prepared. We know that we need to do and when we need to do it. It also reduces stress because we are not constantly worrying about unfinished work. So, in my opinion, this is one of the strongest point in the talk. Many students don't fail because they are lazy or incapable. They struggle because their study time is unplanned. They start later, rush near exams, and then blame themselves. Kiki's message is that planning can give us more control over our studies and our lives. The second important lesson is about creating the right study environment. Kiki says that the place where we study has massive impact on how well we study. A messy table, background noise, hunger, family activity, mobile notifications, or unnecessary objects around us can easily destroy our focus. She suggests preparing the study area before starting. We should have a flat surface, a chair, the books, and stationery we need, and few distractions. We should remove dirty dishes, unnecessary items, and especially things that pull our attention away from work.
This advice may sound simple, but it is very realistic. Sometimes we waste our time getting ready to study, searching for notes, looking for a pen, or checking our phone, then actually studying. Kiki explains that spending a few minutes preparing at the beginning can save a lot of time later. She also recognizes that not everyone has a quiet private room at home. There may be siblings playing, a mother cooking, a father watching TV. We cannot control every sound around us, but we can try control our responses. So, she mentioned using calming background or ambient sounds to block distractions, noise, and focus on the task. Mm, this part of talk is very practical for students in Pakistan and many other countries where it is not always possible to have a separate study room. The important lesson is not that we need perfect conditions. The lesson is that we should create the best possible conditions with what we have. The third lesson is consistency and building a routine. Kiki Fan encourages students to treat study time as something important. We usually make time for things we enjoy, such as meeting friends, watching a show, or using social media. In the same way, we should protect a small, regular time for learning. The purpose is the purpose is not to study all day and become exhausted. In fact, the title itself, "Study Smarter, Not Harder," means that we should avoid wasting hours. We should study with focus, use a proper schedule, prepare our environment, and develop a habit. I think this is the normal strength of the talk. Kiki does not tell students to become robots or to give up rest, family, enjoyment. Her message is the opposite. If we study efficiently, we can finish our work in less time and have more time for our people and activities we value. The speaker style is another positive aspect of this TEDx talk. Kiki Fan speaks in a simple, friendly, and honest way. She does not use difficult language or make unrealistic promises. She uses personal examples that make the talk feel relatable, especially for schools and college students. Her talk is also well organized. First, she identifies common problems students avoid studying or take too long to complete it. Then she gives clear solutions, manage time, prepare right environment, and make a consistent routine. Finally, she gives hope that studying can become more enjoyable. One limitation is that the talk focuses mainly on daily study habit. It does not go deeply into specific learning method for difficult subject such as testing yourself, revising after gaps, or solving past papers. However, this is not necessarily a weakness because the talk is short and its purpose is to give simple, immediate advice. So, personally, I found this TEDx talk motivating because it changes the way we think about study. Many of us believe that if we are
studying for many hours, we are being productive. But sitting with books for hours does not always uh, we have learning. If our mind is distracted, tired, or unorganized, then much of that time may be wasted. So, after watching this talk, I learned that before blaming ourselves for poor concentration, we should first check our system. Do I have a timetable? Is my study area clean? Is my phone distracting me? Have I decided exactly what I will complete today? These questions can help us improve without putting too much pressure on ourselves. The moral of this TEDx talk is hard work is important, but smart strategy makes hard work more effective. A student does not need to study unless they need to study with a clear plan, a focused environment, and regular habit. To conclude, I would recommend this talk to every student who feels stress about homework, exams, or lack of focus. Kiki Fan remind us that even small changes can make learning easier. So instead of saying I have to study for many hours, we should say I will study with focus and purpose. Okay, thank you so much for joining me. Allah Hafiz.